So this is a very important triple star category question from heights and distance taken from NCERT exemplar. The question belongs to the category where we need to prove the height or we need to prove a certain data in terms of trigonometric ratio. Neither the angles are standard nor the data. First of all, we will see how do we make the diagram. A ladder rests against a vertical wall, which is making an inclination alpha to the horizontal. That is the first line of the question. So we create the vertical wall first. This is the horizontal or the ground level, and this is the ladder. As per the data given, ladder is making an angle alpha. Next, it goes like this. Its foot is pulled away from the wall through a distance p. So ladder के foot को away from the wall pull किया गया है. Let us say like this. And this distance they have given it to be p. And it is but obvious अगर हम ladder के foot को नीचे खींचेंगे away from the wall, the top slides down. तो उन्होंने यही हमें कहा है next that so that the upper end slides a distance q down the wall. So upper distance slides a distance q. मान लेते हैं लैडर का टॉप पहले यहां था, अब वो q डिस्टेंस नीचे आ गया है like this, and this is the ladder now, thereby making an alpha beta angle beta with the horizontal. Now this angle of inclination is given to be beta. हमें प्रूफ करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन p by q is equal to cos beta minus cos alpha, sin alpha minus sin beta. First of all, what is needed is to name the figure. I'll name it like this. This is A, B, C. This is D, and this is E. Don't go for some confusing parameters like P, Q. Why? Because P तो पहले से ही डिस्टेंस दिया हुआ है, Q पहले से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फिगर को नेमिंग PQR में मत कर देना, इससे क्या होगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा. इसीलिए हमने क्या किया है, ABCDE ही नेमिंग किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो. बाकी we always look for what? The first two things we look for is the right angle triangles. So पहला right angle triangle, if I'm not wrong, मैं मार्क करूंगा, I will highlight it. The first right angle triangle is DAE, correct है? DAE. And दूसरा right angle is CAB. So second one is CAB. Considering triangle CAB. And the next I will consider triangle EAD. ध्यान से समझना है एक बात, you just focus on the proof. इस प्रूफ में cos beta, cos alpha, sin alpha, sin beta. Nowhere there is a tan. So let us not entertain ourselves in just simply putting tan theta, tan alpha ये होगा, tan beta होगा. इन्होंने जो डिमांड किया है हम वही करते हैं. इस ट्राइंगल CAB में एक बार मेरे को अप्लाई करना है sin alpha. Think logically, in this blue triangle, sin alpha क्या होगा? Perpendicular by hypotenuse. That is sin alpha. What is the perpendicular name? CA. And what is the hypotenuse? CB. So from here I got the value of CA as CB into sin alpha. Do you agree? I'll box it up. क्योंकि हमें sin alpha अप्लाई कर दिया, हमें cos alpha भी तो अप्लाई करना है. So हमने इसी ट्राइंगल में अब क्या अप्लाई किया? Cos alpha. As per the formula, base by hypotenuse. So cos alpha. What is the base of that blue triangle? AB. And the hypotenuse is CB. So if I cross multiply now, what do I get? AB is equal to CB times cos alpha. Do you agree? चलिए इसे भी बॉक्स कर देते हैं. Let us now come to the red triangle. Red triangle में EAD, once again we need cos beta, we need sin beta. तो हमें सबसे पहले अप्लाई करना है sin beta. Sin beta का फॉर्मूला क्या होगा? Let us think. Perpendicular by hypotenuse. That is sin beta. What is the perpendicular value? EA, red triangle. And what is the hypotenuse? ED. If we cross multiply, तो EA का वैल्यू क्या मिल गया?
ED into sine beta. This is ED into sine beta, boxed. Moving on to the cos beta part for the same triangle red. Moving on for the cos beta part for the red triangle, we have base by hypotenuse. So this is cos beta. Base value for the red triangle is AD and hypotenuse is ED. So from here, we got AD as ED times cos beta. Now we obtained 4 terms as of now and एक term justified है क्योंकि हमने क्यों ही sin alpha, sin beta, cos alpha, cos beta अप्लाई किया क्योंकि हमें प्रूफ में वो लोग ही देखना है. Justified. अब you look on this highlighted part. If I need to find the value of Q, what do I write? CA minus EA. सही है? What is the value of CA? CB sin alpha. And what is the value of EA? ED sin beta. Now you think in this perspective, what is CB and what is ED are not the same because that is the ladder. अगर आप लैडर के फुट को पुल करेंगे उसका टॉप स्लाइड हुआ तो लैडर का हाइट तो चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स द सेम. हम दोनों को अगर x मान लेते हैं, द हाइट ऑफ द लैडर इन द फर्स्ट केस वाज x, इन द सेकंड केस इज आल्सो x. इज दिस क्लियर? सो CB वैल्यू इज x sin alpha, ED वैल्यू इज x sin beta. सो इसको सॉल्व करके व्हाट इज द Q वैल्यू वी गॉट? x कॉमन लेने पे sin alpha minus sin beta. A very important equation to be boxed. I'm removing this question because we don't need it anymore. Just keeping the proof part. Now you look on this part. I'm highlighting with yellow color. इस particular part में मुझे P का value निकालना है. So what do I write the equation to be? P is equals to AD minus AB. Now AD, what is the value? ED cos beta. What is AB? CB cos alpha. ED का मतलब है x cos beta, ED का मतलब है x और CB का मतलब भी x है. So अगर हमने कॉमन लिया तो what is the value of P? X times cos beta minus cos alpha. Boxed. Now finally, last step of the proof we are at. You look on these two box equations. If we divide them, P by Q निकालना है हमें. So हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया. So P by Q, ऊपर में क्या आया? X ब्रैकेट में cos beta minus cos alpha और नीचे X ब्रैकेट में the Q right side. It is sin alpha minus sin beta. The x gone. We are left with cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta. Exactly, we have proved the same.